Now we are going to talk about this omentum. As I told you that omentum are divided into two parts. One is greater omentum and lesser omentum. What was again I am repeating कि omentum है क्या. तो मैंने कहा कि कहीं कहीं जो है विसरल पेरिटोनियम की डबलिंग हुई हुई है ऑर्गन्स के अराउंड. तो स्टमक के अराउंड जो डबलिंग हुई हुई है ऑर्गन्स की एंड दिस इज कनेक्टिंग इट टू द अदर ऑर्गन्स, दिस इज नोन एज ओमेंटम. तो जो डबलिंग है वो विसरल पेरिटोनियम की, विसरल पेरिटोनियम इज कनेक्टिंग इट टू द लीवर, पोटा हेपेटिस ऑफ द लीवर. पोटा हेपेटिस में पढ़ेंगे हम जब हम लीवर करेंगे. तो इफ इट इज कनेक्टिंग द स्टमक टू द पोटा हेपेटिस ऑफ द लीवर इन अपवर्ड पार्ट, दिस इज known as the lesser omentum because it is connecting the lesser curvature of the stomach to the liver, while if it is connecting the greater curvature of the stomach to the it is connecting to the small intestine. If it is connecting stomach to the small intestine, then it is known as greater omentum. But a stomach has two parts. When we are going to read the anatomy of stomach, one is known as greater curvature of the stomach and other is lesser curvature of the stomach. So if lesser curvature of the stomach is connecting to the liver, that is going to be by a fold that is going to be known as lesser omentum, while if stomach greater curvature is connected to the small intestine, that is going to be through greater omentum. After that omentum part, we will come to the mesentery part. We said that if doubling of the peritoneum around the stomach and it is connecting it to the other organs, that is omentum, while other than the stomach, other organs which have this doubling, like here we are seeing that here in the small intestine there is also doubling of peritoneum. So if there is doubling of peritoneum other than stomach and connecting it to the posterior abdominal wall, that is known as mesentery. mesentery जो है वो क्या करती है, डबलिंग देती है विसरल पेरिटोनियम की और कनेक्ट कर रही होती है उन विसरस को टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. सी दीज आर वर्टिब्रास, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है. तो वी कैन सी कि यहाँ पे एक तो ट्रांसवर्स कोलॉन के इर्द गिर्द डबलिंग है, दूसरा यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द डबलिंग है. सी ये हाईलाइटेड पार्ट है. तो ट्रांसवर्स कोलॉन को भी ये अटैच कर रही है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी कनेक्ट कर रही है टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. दैट इज नोन एज मेसेंट्री. आफ्टर द मेसेंट्री we are going to learn about the greater sac and the lesser sac. See, अब आपको पहले तो ये बताना है ग्रेटर और लेसर सेक्स से पहले कि कुछ ऑर्गन्स जो है वो इंट्रा पेरिटोनियल होते हैं जबकि कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो रेट्रो पेरिटोनियल होते हैं. जो इंट्रा पेरिटोनियल होते हैं वो इंट्रा पेरिटोनियल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके इर्द गिर्द डबलिंग ऑफ पेरिटोनियम होती है और वो बिटवीन टू लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम वो विसरा पड़े हुए होते हैं. अगेन बिटवीन टू लेयर्स जो है पेरिटोनियम की जो ऑर्गन होगा दैट इज इंट्रा पेरिटोनियम, वाइल if the organs have only one layer of peritoneum and that are lying behind the peritoneum, those are known as retroperitoneum. Retro word is used for behind. So if you can see pancreas and duodenum, this is pancreas and duodenum, they have only single layer which is parietal peritoneum. So they have single layer of parietal peritoneum while no blue area, means no visceral peritoneum around them. These are known as the retroperitoneal organs. So that was the difference between intraperitoneal and retroperitoneal organs. Now come to the part of the greater and lesser sac. So I told you that there is a space between the visceral and parietal peritoneum that is known as peritoneal cavity. So अब जो the sac which is forming behind the stomach, behind this doubling of visceral peritoneum and behind the stomach and behind the liver, जो sac बनती है that sac is known as lesser sac. जबकि जो sac in front of the stomach और between the parietal and visceral peritoneum sac बनती है, that sac is known as greater sac. You can see greater sac all the way diaphragm से शुरू होती है और पूरे एब्डोमेन को कवर करते हुए नीचे यहाँ तक आ रही है, just above the uterus. See, यहाँ तक आ रही है. तो this whole is greater sac while lesser sac is behind the liver and stomach and this small area is known as lesser sac.